दीपांशु एंड धनेश, आप लोग थे क्या लास्ट टाइम? नो मैम। यस मैम, मैं था। लास्ट टाइम क्या देखा था हमने? वो लेंथ वगैरह और ये हर किसी का ये एड्रेस वगैरह का वो किसके लोकेशन बता रहे थे, कैसे कैसे फाइंड हो। क्या क्या था मैम? लेकिन वो मेथड था मैम। मेथड्स थे, राइट? किसके मेथड्स थे? यस, लेंथ था, फाइंड था, और क्या क्या था वो पूरा याद नहीं है मैम। स्ट्रिंग के मेथड्स थे। यस मैम। जस्ट अ सेकंड, आई शेयर माय स्क्रीन। Is my screen visible? यस मैम। यस मैम। Okay, तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था ये, in which we have started with this string methods, right? And some of the methods we have seen, I think till title we have seen, and now we'll start with these further methods in string class. Okay, so this is what our program was. Okay, in which, see, in last lecture first we have seen how to define the variables, then we have seen different data types, right? And in data type there were some basic data types like integer, float, and boolean we have seen, right? And then we started with string. Okay, so first we have seen how to define the string, and then we have seen various string methods, right? So जैसे हमने देखा how to calculate length of the string, then how to print print letter in a particular location in the string, right, using the square notation. After that we have seen concatenation, then how to convert string into uppercase, lowercase, and title case. These all things we have seen in last lecture, right? है याद ये सब? यस, जो भी थे लास्ट लेक्चर में. यस मैम। So now we will see this strip method. Okay, तो strip method से क्या होता है? स्ट्रिप मेथड से क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया था. स्ट्रिप, एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप will remove extra spaces from beginning and or end. मतलब अगर आप सिर्फ strip यूज करोगे तो it will remove extra spaces from beginning as well as from end. If you are using L strip, it will remove extra spaces from left, and if you use R strip it will remove extra spaces from right. That means L strip will remove extra spaces from beginning, R strip will remove extra spaces from end. Okay, now we'll check that. So for that we will first define one string, let's say job is equal to, and purposefully I will add some spaces here, extra spaces, program. Okay, and now we will add some extra spaces at the end. ठीक है, उसके पहले I'll comment all these previous lines. Now we have this variable job. Okay, now we will use those functions one by one. सबसे पहला कौन सा है function? Yes, एल स्ट्रिप। job dot, first we'll use strip. Okay, then next we will use L strip job dot L strip, and then
lastly job dot job dot asked. Okay, save. Okay, तो here you can see यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन after this there are some spaces. So what this मैम strip डिस्प्ले नहीं दिख रहा। sorry, yes, any issue? धनेश क्या हुआ? ये लेंथ बोल रहे हो क्या? ये यहाँ से प्रिंट हुआ। Okay, now you can see this first function से क्या हुआ है यहाँ पे? Yes, what this strip function is doing? Remove space, man. Remove spaces from where? Starting and ending. From beginning as well as from end. So if I select this, there are no spaces after this. Okay. Now what this L strip is doing? Removing spaces from beginning. So if I go and select here, you can see some spaces after this, right? Yes. And what R strip is doing? R strip is removing extra spaces from end, right? So in the beginning you can see all these spaces, right? But at the end there is no space. Got it? Yes, sir. Now see here we have one variable that we will use for next function. We have one variable that is address, right? Now in next function, this find function, we will use that variable. Find क्या करता है? What is function of find? Yes, I have shown you here. Find, give index of specific character in the string, right? जैसे if I want to use find on that address variable, what I will do? Address dot find, and in bracket we can give that any letter that you want to find. Let's say H. Okay, I want to find H in that address Maharashtra. Okay, in comment I will write so you will understand it easily. Okay, that variable is already defined here. We are using that variable to find some letter. Okay, so our variable is address in which we have Maharashtra. Now I want to find address. I want to find H letter in address. Okay, I will print it so we can see what it is printing. Okay, let us comment out this. Okay, I will execute. What it is giving? 2, right? What is 2? Index number of H. Yes, index of H, 0, 1, 2. So it is printing. Okay, now what it will print if I give something which is not exist, like address dot find, and if I give here I is not present here in the address.
So what it is giving? -1. -1. So if that letter is not present in the string, it will return -1. Got it? Find में कुछ problem है? No, ma'am. No, ma'am. Now we'll see the next function, that is replace. Okay, so replace से क्या होता है? If you want to replace some letter in your string, you can replace it using replace function. Okay, so again we'll use address address dot address dot replace. Now replace will have how many arguments? Can you guess? replace को कितने arguments होने चाहिए? 2 arguments, ma'am. Hmm? 2, ma'am. 2, ma'am. Two? Two for what? मैम जिसको चाहते हैं रिप्लेस करना और जो होगा जिससे रिप्लेस करना है, राइट? जी तो आपको क्या यस मैम रिप्लेस करना है आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग में और किससे रिप्लेस करना है? फॉर दैट वी नीड टू आर्गुमेंट्स टू रिप्लेस, राइट? राइट मैम So first we'll give the letter which you want to replace. Which letter you want to replace? Yes. H H. And which letter you want to replace? E E. यस मैम कुछ Okay. Anything you can give. Okay. Just for example, we are taking here. जी मैम So now we'll execute. Okay, I have not given print statement, so it is not printing anything. We will just add print here so that it will print something. Okay, so you can see here all the how many H are here? 2, right? So those H are now replaced with E. Got it? यस मैम This is replace function. Now we have two operators for string, that is in operator and not in operator. Okay, or not operator. So what these will do, in and not in? See here, this in is used to check whether character or sequence of character exist in the string. ये क्या चेक करेगा कि कोई कैरेक्टर या कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स स्ट्रिंग, कोई एक कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें एग्जिस्ट है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इन ऑपरेटर. ओके, सो कैसे चेक करेंगे? जैसे हमारा स्ट्रिंग है ये एड्रेस महाराष्ट्र, अगर इसमें हमें चेक करना है HA है या नहीं, राइट? सो हाउ वी विल चेक HA in address, and we will print this. Print HA in address. I am executing. तो क्या मिला आपको यहाँ पे? True. True. That is some boolean value, right? Instead of HA, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे HI, and if I execute this, it is giving me false. Okay.
Now, can you tell me what is difference between this find and in operator? फाइंड भी क्या कर रहा था, चेक कर रहा था है या नहीं, फाइंड कर रहा था, ये भी क्या कर रहा है, इन ऑपरेटर चेक कर रहा है कि एड्रेस में एच आई है या नहीं. सो व्हाट इज डिफरेंस? यस मैम कैन. फाइंड में मैम इंडेक्स नंबर हम और ट्रू बुलियन फॉर्म में रिजल्ट नहीं आता. फाइंड में क्या करता है वो, if that letter is present in your string it will return you index of that letter, otherwise it will give you -1, right? So it will always return you some number. Find will always return you some integer. Lekin if you see this in operator, it is always returning what? Boolean value. Understood? Similarly, we have not in. ये इसके जैसा ही है, only work in reverse order. Opposite of in is not in, right? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, in के जगह पे लिखेंगे not in. So what it will check? Exactly opposite of in. तो HA not in address, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स. Right. Okay, let us execute this. Okay, I'll comment out this. Why this is false? Because HA is there in the address, but we are saying not in. So HA in address ये आएगा true और उसको हम क्या लगा रहे हैं, not, मतलब false. Okay. Instead of HA, if you give HI, now it will give you true because HI is not there in the address. Got it? Yes ma'am. Any doubt in string methods? No, ma'am. No? No doubt? No ma'am. No ma'am. Okay. Okay, fine. Now next we will see one special data type in Python, that is none type. Okay. So here none is the absence of a value. When there is nothing assigned to any variable, when there is no value stored in the variable, the data type, that data type is called as none. Okay. तो नन कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ नल वैल्यू और नो वैल्यू एट ऑल. नल आपने आपको पता होगा है ना, नल आपने यूज किया होगा. तो पाइथन में वो नल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं नन, दैट इज NONE. So please keep in mind that none is not same as zero, false or empty string. None is none, that means nothing. So in Python there is a none type. If you store none in some variable and if you check its type, it will give you none type. Okay, and only none can be none, nothing else. If you are defining empty string, it is not none. Okay, let me show you one example. Okay, what is none? None means absence of a value. Okay, so if I do simply print none, so I will get nothing. See, none. Nothing is represented in Python by none. Okay. Now if you try to print type of none, you will get class of that none data type.
Okay, sometimes we need this none. Got it? None का type क्या है? Which class it belongs to? Yes, नन टाइप में none type, right? So none type is the class for none. So this is the special data type. जैसे null होता है other languages में या कहीं पे, just like that in Python we have null. Okay, so this was the small topic. The next very important topic in Python we are going to see, that is list. Okay, so list is very much important in Python because जैसे आपको जावा में सी में जैसे arrays है, just like that in C, in sorry Python we don't have array, we have list. Okay, and Python का जो list है, it is supporting so many operations. Okay, so list is very much important topic in Python. कभी भी आप Python प्रोग्रामिंग करोगे या आगे जाके जब भी आप कंपनी में भी Python डेवलपमेंट कर रहे होंगे, Python प्रोग्राम कर रहे होंगे, somewhere you are going to need the list. Okay, so lists are completely unavoidable in Python. तो आप Python सीख रहे हो तो आपको Python का लिस्ट आना ही चाहिए. Okay, so let us start with the list. See, lists are used to store multiple items in a single variable. Just like you store multiple items in array, we can store multiple items in list. Okay, but list is very different than array. In array, what is array? Yes, can anyone tell what is array? अरे अरे जी, बोलो बोलो. बोलो ना. बोलो बोलो. अरे तुम बोलो. मैम array is a combination and collection of single data type Yes, array variable is collection homogeneous of data type कंटेजियस नहीं है. and stored in a contiguous contiguous memory. continuous memory. So array is basically what? Collection of elements of same data type, right? Here list is also collection of elements but not necessary of same data type, right? You can store elements of different data types in list. Okay, that is one point. Another point is lists are created using square brackets. Okay, just like array, we are going to create list using square bracket. Okay, we will see how to create the list. So first is list are used to store multiple items in a single variable. I will add one more point here of different data types. Then next is it is created using square bracket. Okay, now three important properties of list are: it is ordered, it is changeable, and it allow duplicate value. Okay, we will see them one by one. First is ordered. What do you mean by ordered? Order means just like array, list items will have index. Okay, so those items have defined order and that order will not change. Means once you define a list like L1 is equal to, let's say, 1 2 3 and one string you may add it, that is now. Okay, so this will always have 0 index, this will always have index 1, this will have 2 and this will be 4. Sorry, 1 2, this will be 3. They have order. Okay, that means list elements you can access using index, and when you add new items to the list, the new items will be placed at the end of the list. Okay, so if you add some new item to this list, it will always placed after this. Okay, so this is the first property of list, that is order. Then next is it is changeable. This changeable is also called as mutable. Okay, lists are mutable or changeable. That means we can change
We can add and remove items in the list after it has been created. Means एक बार आपने ये list create कर लिया, after creating the list you can add new items to the list, you can delete item from the list, and you can change item at particular location. That means अगर आपको यहाँ पे 3 के जगह पे 4 करना है तो you can change. This is called as mutable property. Okay, तो आपको num के बाद कुछ element add करने हैं, you can add. If you want to remove this num, you can remove, and if you want to edit, if you want to change particular element in the list, you can change it. Okay, so this is mutable or changeable property. And the third property of list is it allow duplicate values. Okay, this is very straightforward, you can understand. In a list you can add same item twice, right? That means if you have L2, in L2 you can have elements like this. Got it? It allows duplicate values. Then as I told you, list items are indexed and the first item has index of 0. Then to determine how many items the list has, we can use len function. Just like string, on list we have len function which will give you number of items present in the list. Any doubt in list? We are going to see program for this, all like No, ma'am. functions supported by list. लेकिन basic idea clear है list का? Yes. Okay, ma'am. हाँ, और ये जो फीचर प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिस्ट के बताए, ये भी आप याद रखो, बिकॉज in further slides we are going to see other collections in Python. जैसे list के जैसा हमारे पास dictionary है, set है, tuple है. Each one of these collection has different properties, right? So all these properties will vary in each collection. So please remember these. Lists are ordered, changeable, allow duplicate values. Okay. Now we'll see one program which will demonstrate the use of list. Okay, I have created here one file, list demo, in which we will see all the operations of list. Okay, so सबसे पहले हम देखेंगे how to create a list. Okay, so you just have to give some name like my list is equal to, which bracket we have to use here to create the list? Square bracket. Square bracket, right? In square bracket you can give as many values as you want. Okay, so here I have created a list of numbers 1 to 5. Now simply you can print it like my original list, and after this I can give My list. my list, right? Let us execute list demo. So here it is, you can see the list which we have just created. Okay, now next operation on list is accessing elements. How to access element in the list? So as we have seen, lists are ordered. You can access element using what? If I Index. want index, right? If I want Address. to access this first element, I can access it using index, right? So कैसे access करेंगे? जैसे first equal to my list, in square bracket I can give 0. Okay, and then print First. first element first.
Okay, so this is the original list and I have printed first element. ठीक है, any doubt? Likewise, you can access any element. Clear? Accessing the elements. It's very simple. Then next we'll see modify the elements. As we have seen, lists are mutable. Okay, here I will write one by one property. So this we can access because lists are order. Getting it? हम ये एलिमेंट्स इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट का एक प्रॉपर्टी है दैट इज लिस्ट्स आर ऑर्डर. ऑर्डर्ड है इसलिए हम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं. राइट नाउ we can see how to modify the elements in the list. Okay, so what I'll do, my list of, let's say 1 equal to 20. So what I'm doing, I'm changing value of element at this first location to 20, right? Yes, ma'am. So we'll print it. I'm giving purposefully I'm giving messages so that you will understand. अगर आप बाद में भी प्रोग्राम रन करते हो तो आपको समझ में आएगा. List after modification. आपने चेक किया मैंने क्लासरूम पे पहले वाले प्रोग्राम्स अपलोड किए हैं. मैम दिख नहीं रहा था वहाँ पे, चेक किया था ना मेल पे. Okay, classroom में now you can go and check. I have uploaded the programs. और क्लासरूम पे मैंने आपको एक यूट्यूब का लिंक भी दिया है जहाँ पे मैंने लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स अपलोड किए हैं. ओके ओके नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस. सी this is our original list and list after modification. So we have modified the element. So which property state that modifying element in list is possible? What is name of that property of list? Mutable. Mutable, right? Mutable or changeable. ठीक है. Then we can append elements to the list. So for appending element there is a function append. It's very simple. My list dot append and in bracket you have to give element that you want to append. That is here 6. I want to append one element in my list. Then we will check our list after appending. Again we will print the list. Okay, let's execute this and you will see. See here 6 has been appended. तो हमने जैसे देखा था कि कोई भी आप एलिमेंट ऐड करोगे लिस्ट में तो वो कहाँ पे ऐड होता है? End of the list. End of the list. Okay, so here you can see हमने append किया 6 तो वो end में ऐड हो गया. Okay, now just like appending the elements you can remove the element और remove के लिए भी simple function है remove. So my list dot remove, you can remove any element. Let's say I want to remove 3 and again we will print the list. So list after मैम वो हमने जो पिछले लाइन में हमने अपेंड जो किया है वो इंडेक्स नंबर डाले हैं 6 या वो जहाँ पे वैल्यू डालना रहेगा वो वहाँ पे सिर्फ इंडेक्स नंबर डालेगा पहले? ये Yes, इंडेक्स ma'am. नंबर नहीं डालते हैं हम, ये वैल्यू डालते हैं. अपेंड में
हम वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू कहाँ पे ऐड होगा, एट द एंड ऑफ द राइट। जैसे मैं यहाँ पे ओके कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 6 10 दे देते हैं। ओके तो नेक्स्ट अभी आउटपुट में आप देखोगे कि 10 आपको एंड में ऐड होता हुआ दिखेगा। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिमूव में रिमूव 3 किया, सो वी आर ट्राइंग टू रिमूव दिस एलिमेंट 3 फ्रॉम द लिस्ट। ओके आई विल एग्जीक्यूट दिस। So see here, can you see this 10 appended at the end? And then ये जो 3 था एलिमेंट वो रिमूव हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रिमूव का भी इंडेक्स Yes, नंबर ma'am. नहीं देना पड़ेगा, जो वैल्यू है वो डालेंगे वो रिमूव हो Yes, जाएगी। remove and in bracket value that you want to remove. So it will remove the ओके value. Okay. Okay, ma'am. और अगर आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं देना है, इंडेक्स देना है, तो आप कैसे दोगे? ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में से ब्रैकेट में आप लिखोगे माई लिस्ट ऑफ जो भी इंडेक्स आपको देना है, जैसे 0 1 2 देना है, तो इससे भी सेम होगा। माई लिस्ट ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा? व्हाट दिस माई लिस्ट ऑफ 2 विल रिटर्न टू यू? रिमूव कर देगा मैम, जो 2 नंबर नहीं, ये सिर्फ मैंने जो इंडेक्स नंबर पे सिलेक्ट होगा। किया है माई लिस्ट ऑफ 2, इसका वैल्यू क्या आएगा? माई लिस्ट ऑफ जो 2 का 2 वैल्यू नंबर आएगा, इंडेक्स 2 नंबर इंडेक्स पे जो है वो, दैट इज 3। तो यहाँ से 3 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं, एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये था आपका ओरिजिनल, देन लिस्ट आफ्टर अपेंडिंग एंड लिस्ट आफ्टर रिमूविंग। तो कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ? सेकेंड पोजीशन का, दैट इज 3। मतलब अगर आपको वैल्यू नहीं देनी है, पोजीशन देनी है, तो आप ऐसे पोजीशन दे सकते हैं, माई लिस्ट ऑफ 2, राइट। सिर्फ रिमूव के लिए आपको देना वैल्यू देना है, तो आप ऐसे दे सकते हैं, रिमूव ऑफ 3। ठीक है, जी मैम. ओके। नेक्स्ट ऑपरेशन वी विल सी, दैट इज इटरेटिंग। अभी तक हमने फॉर लूप देखा नहीं है, वी विल सी दैट फॉर लूप इन डिटेल, बट लिस्ट के ऑपरेशन में है, इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ फॉर लूप दिखा देती हूँ कि फॉर लूप कैसे लिखते हैं। ओके, आई विल गिव वन मैसेज हियर, iterating through the list। ओके, नाउ आफ्टर दिस हम लिखेंगे फॉर लूप पाइथन में लिखते हैं, जैसे फॉर आई इन माई लिस्ट, whenever you want to start the block you have to give here. Okay, and we are using Visual Studio Code, so automatically यहाँ पे स्पेस आ गया। if you are using notepad or anything else स्पेस नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे स्पेस देना है, एक टैब देना है, जिससे ये स्पेसिफाई होगा कि इसके आगे का स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर है, राइट। प्रिंट आई, ठीक है, आई विल एग्जीक्यूट दिस। Okay, so here you can see iterating through the list and it is printing one by one element from the list. Got it? यस मैम। Okay. Now next operation on list is list slicing. What do you mean by slicing? कटिंग। Cutting, right? Cutting. So if I have this list and I want this much slice from the list, selection दिख रहा है आपको? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। Okay, so I want to cut this slice from the list, how to cut, right? या फिर मुझे ये इतना ही पार्ट चाहिए या फिर मुझे इतना ही पार्ट चाहिए, so this is called as slicing, right? So how to slice?
सी माई लिस्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट, हमने कल स्ट्रिंग पे भी देखा रेंज दे सकते हैं, राइट। वैसे ही स्लाइसिंग के लिए आप दे सकते हैं रेंज यहाँ पे, जैसे 1:4। तो यहाँ से क्या होगा, कितने एलिमेंट्स आएंगे 1:4 दिया तो? दो दो एलिमेंट में। कौन 3 कौन से? एलिमेंट, सॉरी 2। 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स? कल मैंने आपको रेंज बताया था कि whenever you specify range like this, 1 will be included and 4 will be excluded। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 एलिमेंट आएंगे। तो 3 कैसे आएंगे? एलिमेंट्स। 1 आएगा, 3 फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट 1 थ्री आएगा, 3 2 सॉरी 3 मैम, 3 4 नहीं एलिमेंट आएगा आएगा, मैम। 0 से फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सेकेंड एलिमेंट आएगा, थर्ड एलिमेंट आएगा। इंडेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स। इंडेक्स 1 2 3 के 3 एलिमेंट्स आएंगे, फोर्थ नहीं आएगा बिकॉज fourth you have given as एक्सक्लूडेड। range here, right? So 4 will be excluded, so 1 2 3 will be included, right? Here we will take one variable, that is sublist. Sublist is equal to my list in square bracket 1:4, that is range, okay? And after this we will print सब लिस्ट। list of one index 1, okay? And यहाँ पे हम देंगे sublist, okay? Let us execute this. See here, slice list from index 1 to 3, क्या आया इसमें? 24 and 5, okay? So here you can see 1 2 3, right? ये 3 एलिमेंट्स आए। यस मैम। And now we'll see 4 more methods, 4 या 5 more methods on list, that are len, insert, pop, reverse and sort। जैसे मैंने आपको बताया len क्या देता है, what len gives, लेंथ मैम। right? So list length equal to len of my list, okay? Then we can print list length, print में देंगे हम length of the list is list length okay, प्रिंट करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द लिस्ट इज 5, this is our list after removing element, how many elements are there? 5, so length of list is 5, ठीक है। जी मैम। मैम ये 5 लेंथ जो बता रहा है मैम, वो क्या इंडेक्स टर्म में बता रहा है या नहीं, वो टोटल क्या नंबर ऑफ बाइट? एलिमेंट्स इन द लिस्ट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने ओके एलिमेंट्स है? 5। काउंट आप कैसे करोगे? ओके 1 से ही करोगे ना, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट्स है? इंडेक्सिंग इज डिफरेंट, इंडेक्सिंग मतलब हर एक एलिमेंट का एक ऑर्डर is called as index and that order start with 0,
लेकिन when we talk about length, length means number of elements in the list. ठीक है? Okay. Okay. Now we have seen append. Append क्या करता है? End में element add करता है, right? Append से क्या Yes, ma'am. होता है? Yes, ma'am. End of the list. It End adds of the list. element at the end of list. Now we have one more function to add element into list, that is insert. जो अभी आपने पूछा था कि एक specific पोजीशन पे हमें अगर कुछ इंसर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट फंक्शन यूज करते हैं. नाउ हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स दिस इंसर्ट इज Index number दे. इज 2, राइट? तो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर देंगे. जैसे मुझे 2 इंडेक्स पे इंसर्ट करना है और क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है वो देना पड़ेगा, राइट? जैसे इफ आई गिव इंसर्ट 2,25 तो सेकेंड इंडेक्स पे 25 नंबर इंसर्ट होगा. ठीक है? Yes, ma'am. We will print here list after inserting 25 at index 2 is my list. Okay, so list after inserting 25, see 0 1 2 second index पे हमारा 25 एलिमेंट ऐड हो गया. गॉट इट? Yes, ma'am. मैम इसमें रन करने का कोई शॉर्टकट की नहीं है क्या? हमेशा प्ले बटन पे ही क्लिक करना पड़ता. कंट्रोल एंटर होता है. Okay. शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एंटर. ठीक है? नाउ नेक्स्ट फंक्शन वी विल सी, दैट इज पॉप. ओके, पॉप से क्या होता है? एनी आइडिया? Pop up. Delete of डिलीट होता है लेकिन लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है. ठीक है? पॉप फंक्शन इज यूज टू डिलीट द लास्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे हमें एलिमेंट देने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एलिमेंट देना है. पॉप will by default pop last element. Okay, pop will by default delete last element. So I will write here popped element equal to mylist dot pop. जैसे रिमूव में हमने स्पेसिफिक एलिमेंट दिया था वो रिमूव हो रहा था, वैसे इफ यू आर यूजिंग पॉप फंक्शन पॉप विल डिलीट लास्ट एलिमेंट. ओके, so here we'll print list after pop. Just a second, just wait. Sorry for the interruption. Now we'll print the list after popping the element. So list after popping element, here my list. Okay, and you can print popped element as well. So we can print the popped element. We have stored it in popped element. Okay, I think it is not getting executed by control enter. Some other shortcut key must be there. ठीक है, ये दिख रहा है आपको? List after popping element, last element has been deleted. 10 Yes. is मैम hmm, देख रहे हैं 10 रूम में. sorry.
10 has removed no. 10 has removed. The next function is reverse. Okay, only one function is remaining. We'll complete it. So as you can see, its name is reverse, so it will reverse the string. So simply my list dot reverse, and then we can print the reversed Element. list, not element, reversed list. Okay, My list. my list. So you can see here, this was our final list, and now the list has been reversed. And the last function we want to see is sort. Okay, so simply we'll do my list dot sort, Sort. Rotation. and we'll print it list after sort my list. Okay, and now this is our final output after all the operations. So this was a reversed list, and now you can see this is the sorted list, sorted in ascending order. Ascending order. If you want it in descending order, you can do sort dot reverse. Simple. Okay. Any doubt in list functions? No ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. everyone understood? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, I'll just take a Thank you, screenshot. ma'am. Okay, so for today we will stop. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Bye ma'am. Bye. मैम कहीं